Hello students, how are you? 1 week to enter into a new year 2022. Celebrate this last 1 week at the fullest. Okay, let's check the FTSE UK 100, how the last week support and resistance level performed. Here, this is the chart. Market opened at the trend decider only. What was the trend decider? Trend decider was 7,250 for UK 100 and it dropped to the lowest level, weekly final support level, and from there it started the journey upward, northward, and managed to hit the final resistance level. It managed to hit. This is on Thursday night. Hit the final resistance level for the 4, 5, 6 hours or 10, 12 hours. It's just taking the resistance at the mentioned level of 7,390. Now let's check the CAC 40, the prime index of France. This is the chart. It opened somewhere near to the support 2. Support 2 we take as a trend decider only. Then it started northward journey throughout the week till Thursday. It was moving up only, crossed the resistance 2 of 7,081 and still trading above it. There is a 1 day to go. Now let's check US 30. This is the weekly chart which is being highlighted. It opened at the trend decider of 35,480 and dropped to 30. It opened at 35,480 and dropped to 34,821. And from there it managed to take the support. This was the final weekly support level, and from there it managed to march northward again like other indices. And here it is just very close to the final resistance of the week. And today we are recording on at the end point of Thursday. There is a 1 complete day left, but all three Dow Jones, CAC and UK 100 performed as a rock. Okay, this is the chart of Bank Nifty. Bank Nifty managed to drop to support 2. Support 2 very well. Support 2 was 34,018. 34,018 is the bottom and 34,038 was the support 2. Just dot on it and then moved up to trend decider. Trend decider is what? 35,587. And it marched very close to it, and from there again it corrected back. Support 2 to trend decider, Bank Nifty. A move of almost 1,400 points from 34,032 to 35,480 or 90. This is the stock of Titan. This covered area or highlighted area stands for this week. Let's look at the levels. What the levels are. Support 2 is 2219. Support 2 is 2219 and here it is. It breached the support 2 and immediately in the next candle it moved above it. Support 2 is always a trend decider, buy above, sell below. There might be 1 or 2 the stop losses, but after that once the buy triggers, then again there was a good upward journey from this level of 2,219. What is the resistance to? That is 2,340.56. 2,341. Let's take that, and that is the top, exact top. This time there is a no stop loss. It hit dot on 2,341 and from there it corrected back again on Friday. Even on Thursday also it touched the resistance 2 and corrected exactly from there. Okay, so this support 2 and support 2 and resistance 2 are being marked. Still there is a trading is going on of Friday.
a move from 2219 to 2341. And what was the trend decider for Titan? That was 2280. It moved above it and managed to take the support near it, and from there finally reached to the level of resistance 2. Support 2, resistance 2 are as important as the trend decider is. Now the most important thing, we talked about the shadow dates, November 15, November 29 and December 12. Now in the last week's post, it was been written, is December 20th the climax of shadow dates or not? That is 20th of December. And even not here on YouTube, but on the blog also it was written the same. These all the dates are related to the cause date, which is December 20th. Main event date, that is December 20th, a day of big bear attack in most of the equity markets. Will it be the climax of shadow dates or not? ये जो shadow dates की story 15 नवंबर से start हुई, will it end on 20th of December or not? That is a big question. If market try to moves up from this level, we can see a continuous uptrends. So this was a post which again has proved to be very good. So I am highlighting, and it is a repetition of cycle of 1.5 to 2 years or 3 years, which works most of the time. Many times it's the opposite also. Instead of making a bottom, it can form a top also, and from there the market can correct. But most of the time it's been witnessed or seen that it makes a big bear market in these days, and after that some recovery is visible after that. Let's see what the time is going to tell. One of the member Ramesh he asked कि जो ये shadow dates हैं और जो cause date है इसको भी explain करें. तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि नए साल में आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन दीज शैडो डेट्स एंड द कॉस्ट डेट और हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड अबाउट इट आई टेल यू हाउ टू फाइंड आउट द फ्यूचर डेट्स. ये कब आगे इन फ्यूचर दिस इज गोइंग टू टेक प्लेस and how to trade on it. That is also very important. Knowing the dates is not that important, but knowing how to trade on it, that is more important to get our bank balance increased. If we are trading in the market with a hope that we will make a huge money, that is a challenge until unless our bank balance is increasing. If we have a system, play on it, which can yield a profit to us. But most of the investors के साथ क्या होता है कि when they have a particular nature, either the bull or the bear. जब भी बाजार तेज चलता जाता है तो वो कहते हैं कि मेरे को टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छा आता है, मेरे को डेरिवेटिव बहुत अच्छा आता है, मेरे को ऑप्शन स्ट्रेटजीज बहुत अच्छी आती हैं. और जिस समय मार्केट करेक्शन लेता है, फॉल करता है या साइडवेज हो जाता है, फॉल भी करता है तो स्ट्रेट फॉल नहीं होता, देन इट फॉल्स एंड देयर इज ए बाउंस बैक आल्सो वेरी क्विकली इन द बियर मार्केट. बहुत तेज़ी से गिरता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता भी है, तो बहुत अप डाउन स्विंग्स रहते हैं. उस स्विंग्स में जब वो अपनी इमोशंस को या अपने ट्रेड्स को कंट्रोल नहीं कर पाते तो कहते हैं कि मुझे तो टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता. तो आप उस समय ध्यान दें कि क्या आपका बिहेवियर बुलिश है और आप केवल बुल खेलते हैं और गिरे हुए मार्केट के अंदर आप कह रहे हैं आपको नहीं आता, तो इसका मतलब कि देन यू नीड टू रिविजिट योर सिस्टम. ऐसे ही जो बियर खेलते हैं कि वो शॉर्ट करके ही चलते हैं, उनको बाय करना पसंद ही नहीं है, और एक स्लोगन उनके दिमाग में चलता रहता है कि ऑल द मार्केट्स आर द बियर मार्केट्स. जो भी मार्केट थोड़ा आज बढ़ रहा है वो कल गिरेगा ही, जो गिरा हुआ है वो तो और गिरेगा ही, ऐसा उनके दिमाग में चलता रहता है. एक बियर, आई विल नॉट नेम ए पर्सन, वो पिछले 1 साल से सब
को बोल रहे हैं कि बाज़ार गिरेगा, तो अभी गिर गया, तो देन ही इज़ वेरी हैप्पी कि चलो आज उनकी जो इच्छा थी या जो उनकी विश थी दैट इज़ बीन फुलफिल्ड। मार्केट सबकी इच्छा पूरी करता है, वो बुल्स की भी, बीएस की भी, और जो साइडवेज प्ले करना चाहते हैं या ऑप्शंस को शॉर्ट करके चलते हैं तो उनकी भी। तो मार्केट इज़ फॉर एवरीवन, बट हमें देखना है वी शुड नॉट बी बायस्ड एट एनी पर्टिकुलर टाइम। आई एम नॉट एडवोकेटिंग कि ये जो वीकली लेवल्स हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इनसे बहुत पैसा बनाया जा रहा है, ये कुछ क्लेम नहीं मैं कर रहा, लेकिन मैं फिर भी इतनी बात तो कहूँगा कि we are not biased when we are tracking these weekly levels। उसके ऊपर है तो बाय है, उसके नीचे है तो सेल है। अपने को जो रोड मैप हमने डिज़ाइन किया है उस रोड मैप के अगेंस्ट मार्केट चलता है तो या चलता है माने ट्रेंड डिसाइडर के नीचे मूव करता है या ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर मूव करता है, तो हमारे लिए एक डिसीजन लेना आसान हो जाएगा, बिकॉज दैट विल बी रिटन ऑन द वॉल कि नाउ दिस प्राइस इज अबव द ट्रेंड डिसाइडर और बिलो द ट्रेंड डिसाइडर, नो बायस। नाउ इफ द मार्केट हैज ड्रॉप्ड बाय फ्यू पॉइंट्स, तो कहां से देयर इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग ए रिवर्सल। सो उसके लिए एक पॉइंट बनाया R2 एंड S2। अगर बाजार गिर रहा है तो स्पोर्ट 2 कैन बी ए पॉसिबल पॉइंट, फ्रॉम देयर द मार्केट कैन रिवर्स, और S2 से भी नीचे गिरता है तो देन इट कैन एंड अप एट S3 और कीप फॉलिंग। एंड इन सेम वे अगर वो बुलिश है, ट्रेंड डिसाइडर से ऊपर गया, तो देन नेक्स्ट पॉइंट विच इज टू बी कंसिडर्ड रेजिस्टेंस 2। रेजिस्टेंस 2 से देर इज ए प्रोबेबिलिटी कि वहां से इट कैन फॉल बैक, लेकिन S2 के ऊपर भी अगर होल्ड करता है प्राइस तो इट मींस नाउ ट्रेंड इज वेरी स्ट्रांग एंड कैन गेट एग्जॉस्टेड नियर रेजिस्टेंस 3। और रेजिस्टेंस 3 के भी ऊपर चलता है तो फॉरगेट अबाउट इट कि भी कोई रिवर्सल है, देन इट इज ए वेरी स्ट्रांग ट्रेंड, इट कैन कीप मूविंग अप ओनली। तो इस एक व्यू पॉइंट के साथ अगर हम मार्केट में हैं, आई एम नॉट सेइंग ट्रेड ऑन इट, ट्रेड ऑन योर सिस्टम। आप प्राइस एक्शन पे कर रहे हैं, मूविंग एवरेज पे कर रहे हैं, आप ऑसिलेटर्स की हेल्प लेके ट्रेड कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वो करें, लेकिन फॉर सेकेंड ओपिनियन यू शुड लुक एट इट कि व्हाट द प्राइस ऑन द वीकली चार्ट इज टेलिंग यू। If that can be an additional information to you. Now, you will say, then that can go against my trading system. मेरा trading system है, उसके against वो मेरे को राय देता है, तो उस टाइम क्या है, you can slow down or you can hold your trades। आपका सिस्टम बोल रहा है बाय, ट्रेंड डिसाइडर है वो बोल रहा है कि सेल, तो at that time you take a small bit और स्लो डाउन और या बिल्कुल स्टॉप कर दें। जब आपके सिस्टम में भी बाय है और ट्रेंड डिसाइडर से भी प्राइस ऊपर चल रहे, गो लॉन्ग। सो इट इज ओनली एन एडवाइजरी टू यू, टू माई फ्रेंड्स, टू माई लव्ड वंस। बाकी जो सिस्टम आप खुद बनाएंगे दैट विल बी द बेस्ट सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। विद दिस विश यू happy trading, happy investing, lots of love and blessings to all my students.